Okay, so what we were doing is this integration we were doing. Okay, so let us first find what is the residue. So we have to find this. So let us do it. Limit z tends to half, and then I can do this z minus half into what I can do is I can write this as z square upon. Wait for here. Just give me a minute. Okay, this will become z minus 2. 1/6. Just take I think I should take minus 2 common out, right? So if I take minus 2 common out, I will remain with z minus 1 by 2. This gets cancelled, and when I take z tends to half, I'll get 1 over 4. Then I'll get minus 2 also, and then I will also get minus 3 by 2 if I'm not wrong. Yes. So overall I will get something like minus 1 by 8, and this 4 and this 3 also. So what I will get, let's just try to find. So this is like 1 upon 4. This 2 gets cancelled with 2. Minus minus is plus 1 upon 12. Is that so? मेरा 1/6 है. मैंने कोई गलती करी है, चेक करो. 1 upon 12 ही आ रहा है, ठीक. Z ठीक है. और रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, तो ये तो है रेसिड्यू. दिस इज योर रेसिड्यू. इस रेसिड्यू से क्या करेंगे? दिस एंटायर थिंग आई विल राइट एज 2 pi iota into residue. Okay, this entire thing I will write as 2 pi iota into residue. This entire thing, if I write 2 pi iota into residue, answer would be 2 pi iota into what is residue? 1 upon 12. So this will, from here I will get iota upon iota pi upon 6, and I have to multiply with 1 upon iota also. So I'll multiply with 1 upon iota. So real part of entire thing, so जो भी अंदर आ रहा है 1 upon iota into iota pi upon 6. So this will come as iota gets cancelled. Real part of pi by 6 is pi by 6. So overall, this integration that I wrote up at initially, this answer would come as pi by 6. Is that clear? Bharat, is that clear? यस सर. सर मेरा π/3 आ रहा था आंसर. ये आंसर करेक्ट है सर? Let me see यार, कोई गलती करी क्या अपन ने? सर I जो don't know. नीचे -2z² + 4z वाली टर्म है, हाँ, उसमें से हम z कॉमन लेंगे तो ऊपर से एक z कैंसिल हो जाएगा ना सर. z² में z बचेगा ना सर. कम अगेन, क्या गलती कर रहे हो? एक बार वापस बोलो प्लीज, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब सर जो हमने फैक्टर्स बनाए उसमें पहला फैक्टर जो है -2z² + 4z. माइनस 2z मैंने स्क्वायर प्लस एक्चुअली 4. ना मैंने क्या? एक्चुअली में डायरेक्ट फैक्टर बनाया अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसके मेरे z+2 और z+½ आ रहे हैं डायरेक्ट फैक्टर्स. ओके, वो वाला फॉर्मूला लगा के -b/a ठीक है. अगर अपन को वो भी माइनस. लगाए तो गलती क्या होनी चाहिए? लेट अस सी. लेट अस सी. सो क्या कहना चाह रहे हो तुम? तुम ये कहना चाह रहे हो इसके रूट्स के कह रहे हो, लाइक माइनस 2z स्क्वायर प्लस 4z, मतलब अगर फॉर्मूला लगाए ऐसा. सो अगर फॉर्मूला लगाए इसमें तो डायरेक्ट 5z - 2z. हाँ जी. माइनस 5z फाइव जेड, -2z² -2 फाइव वाले में फाइव प्लस माइनस रूट ओवर माइनस बी प्लस माइनस 25 25 - 16 -16 अपॉन 2. राइट, ऐसे कुछ अपॉन कहना चाह रहे हो? ठीक है. सो अगर इसको देखते थे कितना आ रहा है, -5 प्लस -3 अपॉन 2, राइट, ये कहना चाह रहे हो? सो -5 -3 तो हो जाएगा -8 अपॉन 2, तो -4. और -5 प्लस 3 हो जाएगा -2, तो हो जाएगा आई थिंक -1, राइट, ऐसे कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर. कहना तो ऐसे ही चाह रहा अच्छा सॉरी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना चाह रहा. आई हूँ. थिंक 2 नीचे नहीं होगा, 4 आएगा 4 सर. होगा, 4 आएगा, 4 आएगा, सॉरी 4, ऐसा कुछ आ सर रहा था. आई थिंक दिस विल बी 4. जी सर. तो उससे -2 और -½ आएंगे डायरेक्ट. -2 और -1. ठीक है. सो -2 और अगर -½ आ रहे हैं, देन तो -2 तो हमारा आ भी रहा है. z - 2 हमने जो टर्म लिखी है,
लेकिन माइनस हाफ में से वो 1 - 2z में से एक को नॉट जो हम गेटिंग कॉमन व्हाई ले रहे हैं। थिंग्स आर नॉट कमिंग सेम सेम क्यों नहीं आ रही चीजें? तुमने ये लिया। ओके। ओके। ये हो गए तुम्हारे रूट्स, -2 और -हाफ, डन। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये तुम्हारा आया। सो देखो, हाँ मैंने जी यही तो सर, यहाँ समझाया था कि अगर तुम कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे, तुमने फिर क्या किया होगा, इस पूरी चीज को लिखा होगा z+½ इंटू z+2, ऐसा कुछ लिखा है क्या जी डिनोमिनेटर जी को? जी सर। ऐसा नहीं लिखते। देखो मेरी बात समझो, ऐसा तब लिख पाओगे जब तुम -2z -2 कॉमन हो। दिस इज फाइन। मैंने भी गलती की है। माइनस एक बार मैं देखूं, मैंने कोई देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगेन लेट अस कम बैक टू द इनिशियल थिंग्स दैट आई आपका स्टार्टेड। तो सही है सर, आपका सही है वो। देखो होता क्या है, जब भी कभी आप ax² प्लस bx प्लस c की बात करते हो, और मान लो आप इसके रूट्स लिया तो अल्फा, और मान लेते हो आप इसके रूट्स लिया तो बीटा। ओके। मान लेते हो आप इसके रूट्स लिया तो अल्फा, और मान लेते हो इसके रूट्स लिया तो बीटा। ओके। तो आप हमेशा याद रखो, अगर आपको इसको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे a कॉमन x-α इंटू x-β। ओके। आप इसको अकेला x-α इंटू x-β नहीं लिख सकते। दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब तुमको एक फैक्टर की इशू आ जाएगी। मतलब यू हैव टू टेक ए कॉमन आउट। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग, जो तुम कह रहे हो, लेट्स से तुमने फाइंड की रूट्स z=−½ और z=−2, आप लिख सकते हो इस पूरी चीज को z+½ इंटू z+2, प्रोवाइडेड तुम इसमें से -2 कॉमन लो तब। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तुमने क्या किया, इसकी रूट्स निकाली, राइट? और इसके रूट्स निकाल के तुमने लिखा कि इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ रूट्स के टर्म में। तो तुमने कहा इसकी रूट से -2 और -½ तो आएगा z+2 इंटू z+½ और एक -2 कॉमन लेना पड़ेगा। समझ गया सर। है ठीक ना? है। या फिर एक काम जी करते हैं, सर। इसी पूरी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ऐसा, लेकिन हालांकि रहेगा तो वही स्ट्रैटेजी। बट ये रियल पार्ट वाला भी सही है ना, गलत तो नहीं ना? यू कैन सी दैट दिस नहीं नहीं, ये, सही है सर, वो सही है। है ना? सो दिस इज एन मेरी वही आंसर लाइक। मिस्टेक थी, वो एक कॉमन नहीं लिया था। सही सो है व्हाट आई, आपका सर। है ना, सो व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट टुक अ रियल पार्ट। You can do another manners also. I'm not sure, but the answer is 5/6 only in the book. Okay. यस सर, इट्स करेक्ट सर। ओके। सो अगर अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड देन लेट अस सी। एक काम करो, कल वाला क्वेश्चन करते हैं वापस से, वही इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कॉन्टूर सी। आई थिंक डी थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लिया, साइन थीटा करते हैं, ए प्लस ए साइन 1 + a sin थीटा, इज दैट यही क्वेश्चन था ना? डी थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा, सॉरी ए प्लस b sin theta, provided a is greater than mod a. A is greater than mod b, sorry. A is greater than mod b. We have to find this integration. ठीक है? So how to go about it? कल again take e की power iota theta as z. I'll get dz upon iota z as d theta. This I can write it as d theta को मैं लिख सकता हूँ dz upon iota z, and this will be equals to 1 upon a plus b z minus 1 upon z upon 2 iota. This entire thing will become bz²। ठीक है? z², bz², एक हो जाएगा 2 iota z, सो +2 iota az। ठीक है? एंड देन 2 iota z ऊपर जाएगा, आई थिंक। ओके। ठीक है, और आई थिंक माइनस भी हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पे आएगा dz अपॉन iota z। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आई हैव टू स्पीक ऑल्सो एंड हैव टू डू ऑल्सो, थिंग्स गेट रॉन्ग एट टाइम्स। ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखते जाना, आयोटा से आयोटा कैंसिल होगा, जेड से जेड कैंसिल होगा। आई डोंट थिंक यहाँ किसी को परेशानी है। अब जो तुम कह रहे हो वही करते हैं, पहले एक काम करते हैं, बी कॉमन लेंगे। ठीक है? सो मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई ट्राई टू से। मॉड जेड इक्वल टू 1, एक किया इसको लिखा डी जेड अपॉन बी, कॉमन ले लो पहले बाहर, 1/b। अंदर अब जो भी रह गया हो, अब सिंपली क्या रहेगा, z² + 2 iota a/b-1। तो इसकी जो भी रूट्स आएंगे उसको बोल देते हैं z1 और z2। मैं अब फैक्टराइज कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2। व्हाट आर z1 एंड z2? z1 एंड z2 आर नथिंग बट दे आर द रूट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज समझ में आई? आई थिंक टू यस भी सर। आएगा, एक टू भी आएगा। ठीक है? यस। तो लेट अस फाइंड फर्स्ट, फाइंड व्हाट इज z1 एंड व्हाट इज z2। सो व्हाट इज z1 एंड व्हाट इज z2? सो देखो z1 क्या आएगा या z2 क्या आएगा, दोनों में से जो भी आएंगे वो इसी तरीके से कुछ आएंगे, -b प्लस माइनस, सॉरी, -2 iota a प्लस माइनस रूट ओवर
b square, this is minus 4a square, b square minus 4ac, तो plus 4b square upon twice, I think twice b आएगा, right? Is that clear? यस सर। सो देखो, इससे तुम्हारे को दो मिल रहे हैं, एक z1 मिल रहा है, z1 में लिख लेता हूँ आई थिंक माइनस आयोटा a प्लस रूट ओवर b square minus a square upon b, if I'm not wrong, please see that, and this will be minus iota a minus root over b square minus a square upon b. Now, in order to करेक्ट सर। evaluate what lies inside and what lies outside, I have to just see कि इसमें से कौन सा अंदर लाया करेगा यूनिट सर्कल, कौन सा बाहर लाया करेगा, बिकॉज whatever lies inside, only for that I have to find the residue. What lies outside, I'm not bothered, right? So let us जो मेरे को likely लग रहा है ये बाहर होता दिख रहा है, let us see z2 का मॉड क्या था, ठीक है, let us see z2 का मॉड क्या था. So z2 का जो मॉड है, या z1 का, वो मॉड चेक करें, z1 का मॉड कितना आता है, this will be equals to minus iota plus root over b square minus a square. अच्छा, already क्या given था, already what was given to us is what was given to us is a is greater than mod b. Yes, is that so? So अगर a is greater than mod b, then a square would be greater than b square. तो एक काम करो, यहाँ से भी common out ले लेते हैं. So what I can do is I can take another, I can write it as minus iota a plus iota root over a square minus b square upon b. ओके, और इसका मॉड, इसका मॉड लेना मतलब इक्वल टू इसका मॉड लेना. आयोटा का मॉड तो वन होता है, उसको भूल जाओ. तो सिमिलरली हो जाएगा माइनस ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी का मॉड, राइट? एक काम करो, ऊपर नीचे रैशनलाइज करो इसको, जिससे कि थोड़ी सी चीजें समझ में आए. तो z1 का अगर मॉड आ रहा है तुम्हारा, आई थिंक ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए प्लस रूट ओवर, मैं इसे रैशनलाइज कर रहा हूँ. ओके, सो मैंने ऊपर नीचे क्या किया, एक काम करो, माइनस ए माइनस, इधर माइनस रखो, ठीक है. सो माइनस ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड करते, मतलब दोनों साइड ये करते इनटू बी. ओके, a this will become a square, so this will become a square minus a square minus b square divided by, एक नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले लो, दिस विल बी a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू b. So this gets cancelled, minus 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 plus, so there will be some b here, so eventually you are left with something like this. So z1 का mod, z1 का जो mod है बेटा वो क्या आएगा, z1 का mod will come out as b upon a plus आई थिंक रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड, राइट? ऐसा कुछ आ रहा है इसका मॉड. यस, इज दैट क्लियर? यस सर। इज दैट क्लियर? अच्छा, दे क्या रखा था, इट वाज गिवन दैट ए वाज ग्रेटर देन मॉड बी. दैट इंप्लाइज व्हाट, मॉड बी विल बी लेस देन ए, आई कैन राइट इट एज मॉड बी बाय ए इज लेस देन 1. अब सोचो यहाँ पर ए से ज्यादा कोई क्वांटिटी है, ऑलरेडी जब हम एक से ए से ही डिवाइड कर रहे थे तो ही वो लेस देन 1 आ रहा था, अब मैं ए से ज्यादा कोई क्वांटिटी से और डिवाइड कर दूंगा तो और नहीं कम हो जाएगा. What I want to say is that mod b upon a was already less than 1. And now I am dividing with quantity which is all the more greater than a. See, a plus something. So now this will be less than 1. It implies mod z1 will be less than 1. Yes or no? यस सर। If mod z1 is less than 1, it implies what? Z1 would lie inside the unit cell. Yes or no? यस सर। And again, if you see, if you take common b out from here, if you take common b out from here, so this is b, and you're left with z square plus 2 iota a upon b z, and again you have something like minus 1. Is that clear? So I can, from here I यस can say that if the roots are z1 and z2, then z1 into z2 will be equal to what? Minus 1. Product of roots is equal to c by a. यस ठीक है, अगर ये c by a है, then I can say that sorry, I can say that I can say that z1 into z2 is equal to minus 1. That implies mod z1 into mod z2 will be equals to 1.
and mod z2 will be equals to what? It will be equals to 1 upon mod z1. And if mod z1 is less than 1, then 1 upon mod z1 will be greater than 0, greater than 1. That implies z2 will not lie inside the unit cell. Yes or no? So overall, I have to find the residue about z equal to z1. Yes or no? Z2 will lie outside the cell, will lie outside the unit cell. Is that clear? Or should I Clear, repeat it again? clear, sir. Clear. Okay, so let us first find residue about z equal to z1. So if I have to find the residue about z equal to z1, I have to take a limit z tends to z1, z minus z1 into this. Z minus z1 gets cancelled. I'm left with only z1 minus z2. Is that easy to follow or should I write? So this will Easy become, to follow. okay, so I will write it as residue will be equals to what? Residue will be equals to nothing, but it will be equals to 1 upon z1 minus z2. Yes or no? And 1 minus z1 minus z2 will be equals to what? I think it will be equals to, I will write it here. So z1 में लिख देता हूँ एक जगह, z2 में लिख देता हूँ. तो यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जैसा है. z1 यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग माइनस आयोटा माइनस ए. तो z1 माइनस z2 करेंगे तो what will come? I think only this will remain. Yes. So I will get 2 Under root b square minus a square by b. So I will get 1 upon 2 under root of b square minus a square upon b. So b ऊपर आ जाएगा. Yes. है ना. Yes, और इसी चीज को लिख सकते हैं b अपॉन ट्वाइस आयोटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यस और नो? ओके. सो ये yes, आ गया रेसिड्यू, ये आ गया रेसिड्यू. ओके. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंटायर थिंग बाय 2 पाई आयोटा एंड 2 by b. So this will be equal to 4 pi iota into b also. A factor of, so overall integral will become 4 pi iota upon b into this residue. Residue is b upon 2 iota root over a square minus b square. B gets cancelled with b. This will become, I think, 2 pi. The overall answer will be equals to 2 pi divided by root over a square minus b square. The same answer that you got earlier in the morning for the case d theta upon a plus b cos theta. The same answer comes. Is that clear? yes, sir. Sir, 4 pi I by b कैसे आया? मैं तो ध्यान नहीं दिया ओके मैंने. ओके ओके. सो एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, इसके आगे कॉमन फैक्टर्स भी चल रहे थे, कुछ कांस्टेंट फैक्टर्स भी चल रहे थे. तो ये पूरी चीज क्या होगी? 2 पाई आयोटा इनटू रेसिड्यूज. Yes, sir. तो 2 पाई आयोटा इनटू 2 बाई बी, तो वो हो जाएगा 4 पाई आयोटा Okay, अपॉन sir. बी इनटू रेसिड्यू. रेसिड्यू हम निकाल Okay, चुके. sir. इज दैट Okay, sir. क्लियर? ओके. सो इज दैट क्लियर? ओके. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेट अस डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस. बस इसमें प्रैक्टिस ही चाहिए, बिकॉज मोर यू विल प्रैक्टिस मोर यू विल बिकम यूज्ड टू ऑल दीस थिंग्स. Okay, so try to do a few more questions on your end also. I'll जितने मुझसे आज हो पाएंगे, I'll try my level best. Tomorrow we'll move to another integral. So now there are only integrals left. So what I would do, I would take one class on physics and one class on integrals. So integrals चलते रहेंगे, and meanwhile we'll do this something like कुछ भी एक बार topic start करेंगे, and we'll do some physics also now because it will become otherwise too boring. ठीक है. तो Yes, sir. cos of, I think the question is given as sin theta minus n theta d theta. So this is the last question for today. Just no, not last question. If there is a time, I'll give one more question, but try to do this question. So how to go about this question? Just see that this entire thing can be written as some real part of theta, e की power something, right? Because there is cos here, na? So थोड़ा सा pattern में changes. So what I can do is I can write this as a real part of something. I can write this entire thing Yes, as a sir. real part of something. So what I would do is I would write it as integration 0 to 2 pi e की power cos theta, and I will write it as real part of something. अब something क्या है? E की power iota sin theta minus n theta. Minus. Okay, and I will be left with real part of integral 0 से 2 pi. पहले इसको arrange कर देते हैं. So this will be e की power iota theta. Sorry, अभी आएगा ये ऐसा कुछ e की power cos theta plus e की power iota sin theta into e की power minus iota n theta, and then there will be a d theta. Yes or no? And what you Yes. see on the, I would say, on the numerator part is something this. E की power iota theta, and there is e की power iota theta raised power minus n and d theta. In all these questions I taught you, what you have to do is you have to take e की power iota theta as z, then this dz upon iota z
sorry, would give you d theta. So d theta can be written as this way. So I will write d theta as, so here you do not have to forget the real part. The real part, mod z equals to 1. This will give you e की power z, z की power minus n dz upon iota z. Is that clear? So you have to write, yes sir, I think, real part of 1 upon iota integration mod z equals to 1. You'll get e की power z upon z की power n plus 1 dz. Clearly z equal to 0 is यहाँ पे लिख देते हैं, z equal to 0 is a pole of order n plus 1. yes sir, है ना? नहीं तो एक बार वेरीफाई कर लेना खुद से, but otherwise I can clearly see that z equal to 0 is a pole of order n plus 1 और mod z equal to 1 के inside ही लाएगा. देखो z equal to 0, yes or no? So yes z equal to 0 lies inside the unit circle. So what I can write this entire thing as real part of 1 upon iota. और इस पूरी चीज को क्या लिख सकता हूँ, पहले इसका रेसिड्यू पता करते हैं. रेसिड्यू क्या होगा, लिमिट z टेंस टू 0, याद करो dn अपॉन dzn, z की पावर n प्लस 1 इंटू e की पावर z अपॉन z की पावर n प्लस 1. ऐसे कुछ करते थे, याद करो. जब पोल ऑफ ऑर्डर n m होता था तो dm माइनस 1 अपॉन dzn माइनस 1, z माइनस 0 की yes. पावर ये कैंसिल हो जाएगा. आप कितनी बार तो भी, 1/n फैक्टोरियल. sorry, 1 by n factorial. Sorry, 1 by n factorial. So you know that even if I differentiate it any times, e की power z will always give me an e की power z only. E की power z when differentiated even n times will also give me e की power z. Tends to 0 पे e की power z becomes 1. So overall you will get from here as 1 n factorial. 1 upon n factorial is what you will get. Okay. So 1 upon iota into 2 pi iota into residue that comes out as 1 upon n factorial. Iota gets cancelled. The answer will be equals to 2 pi upon n factorial, or 2 pi upon n factorial. Real part is 2 pi upon n factorial. No issues about it. Okay, so answer to this integral would be 2 pi upon n factorial. Yes or no? yes sir, Okay, so such questions can be done, isn't it? Easy questions हैं. These are not difficult questions. एक दो और कर लेते हैं, then we'll move forward. समझ में आया यहाँ तक? I don't think there is an issue till now. yes sir, clear. Clear? Try to do this question. This was asked in IIT exam mathematics paper for BSc students. So probably unko they had to do this question by recurrence relations, but I will not do by recurrence relation. I will try to do this question by your complex integration. So cos की power 2n theta d theta. I have to find this integration. Okay, I have to find this integration. So how to find this integration was, कैसे पता करें? I can do in recurrence relation also, but I'll not do because that is not in your syllabus right now. So what I would do is I would try to use complex integration to find the same. Okay, so what I would do is, so what is my function first? My function, I can write it as cos theta. I can write it as e की power iota theta plus e की power minus iota theta upon 2. Okay, so what I can do is, यहाँ पे लिख देते हैं cos theta can be written as e की power iota theta plus e की power minus iota theta upon 2. Is that clear? yes sir, Okay, so what I would get is, if I try to write cos theta, so I would get is integration. This pen is getting stuck. कोई बात नहीं, देखी जाएगी. So mod z equals to 1. I would write it as, I think, z plus 1 upon z upon 2 raised power 2n, and d theta I can write as dz upon iota z. This is clear ना? ये बार बार तो नहीं मैं लिखूंगा. This is clear ना कि d theta को हम dz upon iota z लिख सकते हैं. That is clear हाँ to जी you, I think. सर, इसमें लिमिट्स का कोई रोल नहीं रहता क्या? लिमिट्स का रूल रहता है ना. सो लिमिट्स वुड बिकम mod z इक्वल टू 1 ही तो हो गया. लिमिट 0 से, अच्छा ओके, 0 से पाई दे रखा है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, 0 से अगर पाई दे रखा है, तो व्हाट आई वुड डू इज, यस. सॉरी सॉरी सॉरी, 0 से पाई दे रखा है ना, तो व्हाट आई वुड डू इज, एक काम करते हैं. सो 0 से पाई दे रखा है ना उनको. सो व्हाट आई वुड डू इज, आई वुड सिंस, यहाँ लिख देता, सिंस माय मिस्टेक है, cos थीटा इज एन इवन फंक्शन, since cos theta is in function, I can 2 write times. integration 0 से 2 pi
into cos 2n थीटा d थीटा एज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, और यू कैन से, अच्छा एक काम करो, ऐसा कर लेते हैं, जीरो से ऐसा करते हैं, cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही तो होता है. So integration 0 से 2 pi cos 2n theta d theta can be written as 2 times integration 0 से pi cos of 2n theta d theta. ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? स्टैंडर्ड ट्वेल्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a यस f सर, of यस सर। x dx can be written as 2 times integration 0 से लेकर a f x dx provided f of 2a minus x is fx. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट यू ऑल नो. सो ओवरऑल एक काम करते हैं, हम 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करते हैं और उसको हाफ कर देते हैं, सो वील गेट द आंसर. सो हाफ और चलेगा यहाँ पे, एक और चलाते हैं. इज दैट क्लियर? यस सर। सॉरी सॉरी, यस माय सर। मिस्टेक. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. अब एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस. 1/2 इंटीग्रेशन mod z इक्वल्स टू 1. हियर यू विल गेट, आई थिंक एक 2 और आ जाएगा, तो आई थिंक इट विल बी 2 की पावर 2n प्लस 1, और यहाँ पे आएगा z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z भी आएगा, और इसकी होल पावर 2n तो यहाँ आएगी आएगी, एंड हियर एक z इज देयर, सो दिस विल बी z की 2n plus 1, right? Is that clear? And one iota will also come. यस सर। Is that clear? So now let us see what sort of similarity here it is. So you can clearly see that this is a pole. I will write that z equal to 0 is a pole of order 2n plus 1. Okay, it is pole of order 2n plus 1. So what I would do is I would simply write the residue first. So let us first find the residue. So limit z tends to 0, and I think d2n upon dz2n. Here you are left with z square plus 1 raised to power 2n divided by z की power 2n plus 1 into z की power 2n plus 1. Is that clear? 1 अपॉन आइटा रहने दो, उधर ही पड़े रहने दो, आई एम नॉट कंसर्न देयर. ये कैंसिल हो गया. ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग यू हैव टू फाइंड एट z equals to 0 or z tends to 0. You can write even equal to 0 because this is a polynomial. No issues about it. Clear? यस सर, 1/2n फैक्टोरियल। And sorry यार, एक 1 upon 2n whole factorial also would come here. Okay, sorry. ठीक है, यहाँ तक समझ में आई मेरी बात? एक काम करो, यस what सर। I can do is I can see यहाँ पे 2n 2nth डेरिवेटिव समझ पा रहे हो? Here it is. Here I will write. ये कौन सा 2nth डेरिवेटिव है? ठीक है, so what it would do, इधर जब तुम एक्सपैंड करोगे, लेट्स से z स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2n को जब एक्सपैंड करेंगे, सो हाईएस्ट टर्म क्या आ सकता है, z की पावर 4n. देखो, यस और नो? तो z की पावर यस सर। 4n का 2nth डेरिवेटिव भी निकाल दोगे तो भी देयर वुड बी समथिंग लेफ्ट ऑन द एक्सपोनेंट दैट इज अराउंड 2n. मतलब ये समझने की कोशिश करो, लेट्स से if I expand it, I will get z की पावर 4n, then I will get some z की पावर 4n minus 2. इस तरह के कुछ टर्म्स चलते हैं. I'm not interested in some coefficients, and then there will be last term would be some 1. 1। Okay, what is that term which can give you answer? Only that term whose power is z की power 2n. Okay, some coefficient would be there. I'm not right now I'm writing it as alpha 2n. So देखो, अगर ये वाला जो term होगा, it will get differentiated 2n times and it will remain some constant. Okay, इससे lower order terms जैसे मानते हैं z की power 2n minus 2, तो at when it is differentiated 2n times it will become 0. 0 आ जाए। जैसे समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और मैं कहूं कि d3 अपॉन dx3 निकालो, तो तुम कहोगे यार 0, बिकॉज एक्स स्क्वायर हैज बिकम 2 नाउ, and in the very third derivative it will become 0. So all the lower order terms will become 0. All the higher order terms will have some power left with z, है ना? some power, तो there will be some power left ना, अगर तुम इसको कहोगे कि I am differentiating it 2n times, यस सर। so there would be some power left. I can also write a formula, बट लिमिट z। but limit z tends to 0 would become 0. So I'm not interested here. I'm not interested here. I'm only interested in finding what will be the coefficient of z की power 2n in this entire expression. Are राइट। you getting my point? So देखो, इसमें जो z की power 2n का coefficient होगा, I'm interested there only. और z की power 2n का coefficient कब आएगा? जब इस पे power z स्क्वायर पे power चल रही हो n की.
इज दैट क्लियर? तो जेड स्क्वायर पे पावर जब एन की आएगी तभी तो जेड की पावर 2n होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो मेरी बात समझने यस की कोशिश करो। जब भी कभी व्हाट वी डू, लेट्स से इफ आई एम सेइंग आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन x प्लस वाई की पावर n, तो तुम क्या करते हो? एन सी नॉट x की पावर n y की पावर 0 प्लस एन सी वन एक्स की पावर, ऐसे करते हैं ना, याद करो। एन सर, एन एन माइनस एन वन माइनस वाई की वन। पावर 1, ऐसा कुछ करते थे बचपन में, याद करो। क्या कहते हो इसको तुम? आई डोंट नो, आई थिंक बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे कुछ ऐसा करते थे ना, इफ यू रिमेम्बर जी क्लियरली। सर, जी सर। इस तरीके से कुछ। ठीक है। सो इफ आई जस्ट सी कि अगर इफ आई एम सेइंग यहाँ पर है 1 + z² की पावर 2n, तो खुद सोचते हैं कि इसमें वो कौन सा टर्म होगा जब z की पावर 2n। आई वांट टू से दैट what will be the coefficient of what will be the coefficient of uh, z square when it is raised to power n. So that will be, I think, equal to 2n cn. Is that clear? तभी तो z की पावर 2n आएगा, because 2n cn में, I mean, आप समझ पा रहे हो मेरी बात? Are you getting my point? See, nc1, nc2, nc3, if it is power 2, then all these terms will come as 2nc naught, then there will be 2nc1 multiplied with something. There will be some term called as 2ncn, जो अंदर है z square raised to power n, and और so on एन, and so on. यस सर। Are you getting my point? देखो ये चीज जो है ना, 1 + z² ही तो है, तो you can take x की जगह 1 and z square की जगह y. तो खुद सोचो, ये जो y वाला टर्म है, इट इज जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी चाहिए? n, तभी तो इट विल बी इक्वल टू जेड की पावर 2n. सो द कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2ncn. एंड इफ यू डिफरेंशिएट इट, if you differentiate this entire term 2n times, टू एन सी एम मिल so you will get, I think, you will get 2n factorial into 2ncn. Is that clear? रही। यस सर। Okay, so this is one. Okay, ये चीज पकड़ के रखना. Okay, now let us move. So ये चीज जो तुम्हारी आएगी, eventually you are left with only one term, that is 2n factorial into 2ncn, and 1 upon 2n factorial is here, so this gets cancelled. So overall you are left with what? So eventually this entire residue will be nothing but it is equal to, I would write the residue will be equal to what? It will be equal to 2ncn. Is that clear? यस सर। ठीक है. 2ncn is what? I think you are well acquainted, well aware that 2ncn would be, I think, 2n factorial divided by n factorial into n factorial, because if you remember, ncr is what? N factorial upon. यस सर। Is that clear? So you 2n minus n is again n factorial into n factorial is n factorial ka square, so you will get 2n whole factorial divided by n factorial ka whole square. Is that clear? यस सर। So this is your residue. एक 1 upon iota और बच रहा है, that I have to keep care, and I have to keep care of this also. So residue into 2 pi iota would give you the answer, but there was 1 upon iota also there, and then this residue is 2n factorial upon n factorial ka whole square, and then there was 1 upon 2 ki power 2n plus 1. So this is your answer. Is that clear? Iota gets cancelled with iota, 1 2 cancels this, so I think answer would be pi upon 2 ki power 2n, and here it will be 2n whole factorial, remember this, and this will be n factorial whole squared. Okay, is that clear? यस सर, प्लीज। Okay, so this is an answer for cos ki power 2n theta. So I usually do this question using recurrence relation for mathematics people, but for right now, because you are aware with complex analysis, so I've done this entire question using complex analysis. Is that clear? So इतना difficult नहीं पूछेगा कोई भी exam में. So this was the most difficult that I could give you. A few questions that I'm leaving to you as a homework, and I'm giving the answers also, so that you should do them as only homework. Only 2 or 3 I would write, don't worry. So this is integral 0 to 2 pi. Try to do this question: cos n theta d theta divided by, I think, 1 plus 2a cos theta plus a square
and also this integration would come out as, I think the answer given in book is 2 pi iota into minus 1 raised power n a raised power n divided by 1 minus a square. And the similar question, you have to find what will be the answer of integration 0 से लेकर 2 pi sine and theta. The denominator is the same, 1 plus 2a cosine theta plus a square, and this answer is 0. Okay, is that clear? ये चीज समझ में आ गई? Can you do these two questions? इनको try करना. Yes. एक क्वेश्चन और लिख लो so that at least एक डबल पोल जैसा भी कुछ हो जाए. So let us do one more question. Let us write one more question. Integration 0 से 2 pi d theta upon 5 minus 3 sine theta whole square. So try to do this question. This answer comes out as 5 pi by 32. Okay, so I hope everything is clear. I think यहाँ तक I don't think there is any doubt. Okay. Yes, sir. Okay, so any doubt if there, because I'm close, I'm leaving the meet. So just tell me any doubts or difficulties if they are there, so that I can close it. I can end the session. सर Okay. एक वैसे जनरल डाउट है. पूछो. सर एक क्वेश्चन था, उसमें ना सीरीज दे रखी थी, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है बस, बट कुछ ऐसे दे रखा था एन एक्स की पावर एन, सपोज कुछ ऐसे दे रखी सीरीज. हम्म. और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी. हम्म. और और फिर चार ऑप्शन दे रखे थे कि रिकरेंस रिलेशंस कौन सा वाला सही है. तो सीरीज से और डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या कनेक्शन है? ऐसे. मोस्ट प्रॉब्ली जो मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बात, हो सकता है दैट डिफरेंशियल इक्वेशन वुड बी सम लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रॉब्ली सम, मतलब कोई स्पेशल फंक्शन वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हाँ मतलब. जी, काइंड ऑफ ठीक है. एंड रेकरेंस रिलेशन एज सच एग्जामिनेशन वाइज बात करोगे तो यू जस्ट, आई विल टेल यू समथिंग कि तुम क्या करो, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर सम स्पेशल फंक्शंस कि अच्छा ये स्पेशल फंक्शंस होते हैं. एंड ट्राई, जैसे मान लेते हैं कि मुझे पता है कि p2x क्या होता है, लेट्स से लेजेंडर पॉलिनोमियल 2 कितना होता है, 1/2 3x स्क्वायर माइनस, या फिर p3x क्या होता है, आई थिंक इट इज 1/2 5x क्यूब माइनस 3x, और ऐसा कुछ होते हैं, मतलब समझ रहे हो. यू जस्ट ट्राई टू प्लेस n इक्वल टू ऑल दीज वैल्यूज एंड ट्राई टू डू दैट, मतलब इन एग्जामिनेशन आई एम सेइंग, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. मतलब जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, ट्राई टू रियलाइज कि वो किस स्पेशल फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले, मतलब whatever that differential equation is, try to relate कि वो differential equation will yield you what sort of special function. Remember a few special functions, like अगर legendary polynomial है तो order 1 2 3 तक के याद कर दो. And similarly Hermite also, because Hermite is also quite important in your quantum mechanical oscillator also, it will come. So in any case you have to remember, है ना. For example electrostatics, all these things will come up. तो ऐसे याद करो and try to feed the values of n into your recurrence relation and try to solve it, because recurrence relation in examination you will not be able to, you don't have that amount of time कि वो derive हो सके, and that is not easy thing to do. ठीक है, because in our MSc classes also we used to remember them and then write all, everything, like special functions एक topic रहता है हमारे, you also know in MSc, but I don't think that would be feasible thing to do in exam कि वो चीज याद रहे. My suggestion would be just try to place some values of n, and let's say your differential equation corresponds to uh, the solution, the solution of the differential equation comes in legendary polynomial, और let's say तुम्हारा जो भी recurrence relation दे रखा है yn double dash और yn dash 0, ऐसा कुछ दे रखा होगा most probably, right? तो you just see कि ये yn है क्या, हो सकता है legendary polynomial हो, n की जगह let's say तुमने रखा 4 या 3 रखा, तो y3 double dash, मान लेते n-1 है तो y2 dash. Are you getting my point? I'm just giving an idea. You Yes, just sir. send me that question, I'll solve it for you. No issues. But for examination perspective, I will always still don't remember those recurrence relation. That will be too difficult thing for you to do. Okay, there are too many different good things that you can do instead of doing a special function complete thing. I would come to special functions also, don't worry. But I'm leaving these 3 questions as a homework, and meanwhile you said